4 5 6 3 4. Anything do you have here? There is 4. Yeah. Okay. So shall we start from the first one, or do you have any doubt in this 1 to 7? From question number 1 to 7. Okay, fifth and sixth. Anybody else? Anything from 1 to 7? Yes, anybody else? Okay, see, uh, to do the fifth question, you are having so many method. That is, if the graph of y equal to f of x passes through 2 comma 3, then the graph of y equal to f of x minus 3 certainly passes through. So one method is to take an example. You just take a function such that you take a function such that the graph passes through 2 comma 3. That means what? You start with suppose y equal to if I take this, say y minus 3 equal to x minus 2. So does this point satisfy the equation? Just check quickly. What I'm taking y minus 3 and I'm putting x minus 2. So this is just a straight line for me, and this guy is satisfying this equation. And what is my question? If I reframe this function as this, so what is my y is this x, this minus 3 will go there, then it will be 3 x plus 1, correct? So this is my original equation. So if I change it to this, y equal to, at the place of x I am putting x minus 3, so this will become x minus 3 plus 1. So y equal to what? X minus 3 plus 1, that means what? 1 minus 2, so it is x minus 2, correct? So this is what I am having new equation. So whatever point they are asking, the new equation should satisfy that, correct? So y equal to f of x minus certainly passes through. So let us check which of them satisfy this equation. Suppose I am putting x equal to 2 here, then y must be 0. So option A is gone. If I am putting x equal to minus 1, then y equal to minus 3. This is also gone. If I put x equal to 5, then y must be 3. Do you see the option C is satisfying the equation? Yeah? Is that clear? Is the method clear to you? You don't have to do in general. I just started with a example, and since it was the MCQ question, so I did like this. Yeah, tell me. See, correct. That is what I am telling you. Point क्या था 2,3 ना, correct? So x के position पे I can see 2 and y के position पे I can see 3. So what did I consider? I consider x minus 2 and I consider y minus 3. मतलब y minus y के position पे जो है and x minus x के position पे जो है. Now let us quickly check whether they are satisfying, because left hand side and right hand side both become 0. Do you see? So this is how you should consider. Can you quickly do it here? What will be my equation? No. Think about it. Here at the place of y coordinate it is minus 1. No? So it will be y minus minus 1. Do you agree? Correct. And what about this? This will be x minus 3. Yes. Is that okay? So let us quickly solve it. So what will be your y? See, 1 minus 1, this is plus 1. So what will be your y? Y will be x minus 4. Do you agree? This is my original y equal to f of x, correct? And they are saying just consider y equal to f of x plus 7. So you want to consider y equal to x minus 4 plus 7. That means what? Y equal to x plus 3, correct? So this is my new equation. I have to check which of the following points satisfy this, correct? Agreed. Let us check. If I put x equal to 3, I am getting y as 6, but this guy is telling 10. This is gone. If I put x equal to minus 1,
if I put x equal to -1 here, so it will be 3 minus 1, it must be 2, y का value 2 आना चाहिए, but this is telling me 3, this is gone. Correct? If I put x equal to 3, then yeah, this is satisfying, option C. Agreed or not? Do you agree how to consider this function? Yeah. अभी मतलब इससे सिंपल हो ही नहीं सकता ये, so I just tried to make it very simple to you, just that's it. You can take any function satisfying that point. So better मैंने क्या लिया, just straight line लिया by taking the coordinates से subtraction, that's it. Okay. Anything else up to 1 to 7? What about this graph? The graph of y equal to sine x. What about question number 3? C होगा. Perfect, because do you know the graph? शायद मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में. Do you see? X axis पे कहाँ तक कट कर रहा है ये? It is cutting infinitely many times. It will go on. Correct? Yeah. Okay. So shall we go to the next page? See. Yeah. Good. Same for question number 1 and 2. You just need to check. You need to check whether they are satisfying the equation or not. That is simple. Okay. Question number up to 8 to 7. From 8 to 7. Tell me what are the doubts. 8 to 17. Sorry, that is 17. Sorry. 10, 11 and 12. Anybody else? Question number 10 is similar to that previous one जो अभी just मैंने किया. Can you do that similarly? Even question number 9 is also same as that one. But there is some condition. There, yeah, they are taking even function, odd function. Yeah, I'll just talk about that. Okay. So I'll do 9, 10, 11, 12. Anything else? Do you want something from here? They are quite simple. Okay, 13 भी ठीक है. Is that okay? Start करें 9 से. Yeah. So what is the question number 9? If the graph of an even function passes through 3 comma minus 4, so now what I have to take care that I have to get a function which is an even function. What do you mean by even function? That is f of minus x must be equal to f of x, correct? Do you agree? But what is how do we write y equal to f of x? ऐसे लिखते हैं हम लोग. Correct. So what I need to see, जो right hand side है, this guy is same as f of minus x also. Correct. So better है कि अगर x का square लिखा तो काम हो जाएगा. Yes. Try to see this. If the graph of the function is an even function, so I'll use the same technique जो मैंने पीछे use किया था. So I'm going to write this as y minus 3 and I'm going to write it as x minus 4. Is that okay? X plus 4 na? Correct? Is that okay? But I wanted something else. I wanted even function, so मैं क्या करूँ, इसको square लिख देता हूँ. I don't care. Actually, left hand side and right hand side is satisfying this equation. Do you agree? Just check. I am using the same technique जो मैंने पहले use किया था. Just check whether the left hand side में अगर मैंने y equal to 3 put किया, so this is becoming 0. Right hand side में if I am putting x equal to minus 4, then this is becoming 0. I just need to check whether it is an even function or not. So let me solve y. What is y? That is x plus 4 the whole square minus. Oh, I think it won't be a even function. I'm sorry. I have to make it quite different. Sorry. That's why they are giving minus 4. No issue. So let us see. Y minus 3. Sorry. X minus. I will start from. हाँ, correct, correct.
y प्लस 4 एंड ये क्या आएगा x माइनस 3। अगर ऐसा किया तो अभी ये इवन फंक्शन नहीं है, समझ रहे हैं, अभी मेरे को इवन फंक्शन चाहिए ना ये। तो क्या करें इसको, लेट अस डू वन थिंग, can I write this as x minus 9? Can I write this as x minus 9, sorry x square minus 9? सी एक्चुअली मुझे एक्स स्क्वायर को सिस्टम में इंक्लूड करना ही है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इवन फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी सेम एज एफ ऑफ एक्स. सो आई एम, डू अंडरस्टैंड हाउ एम आई थिंकिंग हियर? द मेन थिंग इज, द थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, करेक्ट. आई वॉन्टेड दैट यहाँ पे पूरा जीरो होना चाहिए इफ़ आई पुट एक्स इक्वल टू 3. सो बट मेरे को एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, सो आई रोट इट लाइक दिस, दैट इज 3 का स्क्वायर इज नाउ दिस इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. सो व्हाट विल बी y इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 13 ना. सो दिस इज माई फंक्शन, करेक्ट. डू यू अग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. Yeah, good. Okay, now what is the question? Then the graph certainly passes through any other point, and what is that point? इवन ये डायरेक्ट भी देख लेता. सी इसको हम लोग लिखते कैसे, दिस इज एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स ना. दिस इज हाउ वी नीड टू राइट. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ माइनस एक्स. सो दिस गाय विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर रखा तो वो भी सेम आना चाहिए इसी से एक्सपोर्ट करने पे, सॉरी माइनस एक्स पुट करने पे सेम आना चाहिए. सो मतलब आई थिंक डायरेक्ट दिख रहा है माइनस एक्स पुट करने पे दिस शुड बी एफ ऑफ एक्स ओनली. मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज माइनस एक्स कॉमा एक्स. यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस ऑल्सो. तो वो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अगर मैंने 3 यहाँ पे पुट किया, सो इट विल माइनस 3 कॉमा एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 क्या है, दैट इज माइनस 4 अगेन. सो इट विल बी माइनस 4. डू यू अग्री मैंने क्या किया? आई कैन डू इट बाई दिस थिंग ऑल्सो. दैट मीन्स नाउ जस्ट मुझे हर एक पॉइंट को पुट करके सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट. एंड चेक उसमें से कौन सा सेटिस्फाई होता है. दैट इज़ द वन स्टेप. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम नॉट यूजिंग दिस. फ्रॉम द ऑप्शन आई गॉट टू नो समथिंग. I got to see that, see the function is even function. What do you mean by even function? F of minus x, that is same as f of x. Do you agree? And the point they are giving me as 3 comma minus 4. That means what, I am just relating it as x comma f of x, correct. But I know something, if I want to write minus x, then it will be again same as f of x only. That means what, आई हैव वन मोर वैल्यू. अगर x की जगह पे 3 की जगह पे अगर मैंने -3 रखा, देन ऑल्सो आई विल बी हैविंग सेम गाय -4. डू एग्री? सो नेक्स्ट पॉइंट मुझे डायरेक्ट दिखता है इधर से, ऑप्शन बी. एंड जो उधर से किया उधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा. डू यू एग्री? एक्चुअली ये क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि हर एक का कोऑर्डिनेट 3 4 ही था और इधर भी 3 4 ही था. सो दैट वाज इजी टू डू. पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं, मतलब हर एक अलग थे. Is that okay? Is that clear to you? Just think about this. F of minus x equal to f of x. I started writing 3 comma minus 4 as x comma f of x. Then I just wrote x की जगह पे minus x. So this will be f of minus x, but that is same as f of x. So I'll be writing f of x here. So just resubstitute, x का value 3 था. So it will be minus 3 and this will be just minus 4 as it is. So what is the answer? Minus 3 comma minus 4. That is option B. Can you similarly do for question number 10? It is talking about odd function. What is odd function? F of minus x equal to minus of f of x. Let us do the same thing, okay? So 2 comma 5 को मैं क्या लिखूँगा, x comma f of x. Okay, tell me. If I want to write minus x, तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे अगर minus x पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, it will be f of minus x. Perfect. F of minus x is same as minus f of x. Nice. Can you tell me the point? Minus 2 comma minus 5. Do you agree? Yes, that is option number B again. Yeah, option B.
सी दिस वाज इजी बिकॉज यहाँ पे 2 और 5 ही सब वेरी हो रहे थे प्लस माइनस में, सो ये इजी था करने को, अदरवाइज तुमको वही करना पड़ता। या ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, among the following dash is neither an even, yeah that is easy to check na, you just check whether it is even or odd, अगर even भी नहीं है odd भी नहीं है तो it is none of them. So what about the first one, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो तो ये क्या आएगा, दिस विल बी अगेन x, cos of minus x is, what is cos of minus x, so this is even function, do you agree? What about this one, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो सो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, सो माइनस कॉमन लेके फंक्शन लिख सकता हूँ, सो दिस इज ऑड फंक्शन. व्हाट अबाउट दिस वन, this is the culprit for us. Correct, that is neither even nor odd, do you agree? Yeah, so option C is the correct one. Okay, what about 12th one, among the following dash is an even function, same thing, बोलो. ये तो odd है पता है तुमको, ये या ऑप्शन बी, that is quite clear. You know why not this, y equal to this, why this is not an even function? Yeah, why this is not an even function? See, mod x is lying between two thing, that is less than equal to लिखता हूँ मैं, it may be an integer only. Yeah, this is lying between x and x minus 1, do you agree? जो ग्रेट लोएस्ट इंटीजर है एक्चुअली, फ्लोर फंक्शन है, दिस इज माई इंटीजर, दिस इज माई नंबर x एंड फ्लोर फंक्शन विल बी इंटीजर पार्ट ऑफ दैट x, करेक्ट, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1, जस्ट कुछ सब्ट्रैक्ट किया मैंने एक डिजिट, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1. सो अगर x की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो होल ये माइनस में चले जाएगा पूरा फंक्शन, दैट इज नॉट गिविंग मी द वैल्यू. Okay, what about this one, 13 भी same ही है, among the following which is odd function, what about the first one, it is even function, what about the second one, even function, what about the third one, yes odd function, option C ना. Yeah, and which one, 14th also बोला था, 14, 13 ही था शायद. Anything else out of this up to 17, anything? Yes, anybody, anything? Okay, good, let us go ahead. From 18 to 27, देयर इज अ करेक्शन. हाँ, यहाँ पे f की जगह पे 3 कंसिडर करो, या 3 या पाई बाय 2 शायद, आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या बोला था, पाई, यस पाई, करेक्ट, f की जगह पे पाई कंसिडर करो. यहाँ पे भी ये भी f ही है ना, कि क्या है ये, नो दैट इज़ ओके, e है, दिस इज ऑल्सो पाई. ओके, टेल मी कौन सा क्वेश्चन इसमें से, फटाफट 18 to 27 में से. Yes, anyone? Don't be shy. If you have any doubt नहीं है तो that is well and good. अगर है तो don't be shy, because exam है तो you should ask. You are getting 25th. Okay. Anybody else? Anything else? Anybody? Okay, so let us start 25th. See, to solve a limit you just need to check first thing कि उसमें denominator term है क्या. अगर denominator term है then you have to think about any formulas or anything. अगर नहीं है तो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देने का, करेक्ट. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जब भी तुम्हें लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज लिमिट ऑफ समथिंग यू वांट टू फाइंड,
जस्ट चेक वेदर देयर इज अ डिनोमिनेटर टर्म. अगर डिनोमिनेटर टर्म नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर देने का वैल्यू. सो देयर इज नो डिनोमिनेटर टर्म, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ क्या आएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 1 ना, एंड प्लस इट इज साइन 0. व्हाट इज दैट, log 1 is 0, sin 0 is 0. सो cos 0 आया. cos 0 क्या होता है, cos 0 1 ना, करेक्ट. whenever you want to solve limit question just try to see that. okay, next बोलो. what about 26 एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस चाहिए इनको. दैट मीन्स फंक्शन कौन सा लोगे तुम लोग, 0 प्लस मतलब कौन सा फंक्शन आउट ऑफ दिस टू. परफेक्ट, ई रेज टू एक्स. तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स आएगा, मतलब ई रेज टू 0, मतलब आंसर क्या आया 1. करेक्ट. एनीथिंग एल्स. ओके गुड. या आउट ऑफ 28 से 33 बोलो. 28 29 भी. ओके, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली डी आएगा. करेक्ट, क्योंकि m0 नहीं होना चाहिए ना, m0 हो तो ये नॉट डिफाइन हो गया, सो ऑब्वियसली डी आएगा. यस. एनीथिंग एल्स आउट ऑफ 31 32 33. Okay, so let us start. Consider the following statement. The first is limit f of x is L, that implies f of e equal to L. Oh, is that true? And oh, they are saying real number. Okay. Limit extended to f of x that is L implies f of a is a real number. Okay, so only one is true, only two is true. Either. What can you say? Bolo. This guy need not be true. And I have some example. Do you have? This is actually definition of this part is definition of limit, correct? But if limit exists does not imply that that limit is the function is continuous at that point, and this part is telling me that function is continuous. Do you know the difference between limits and continuity? I'll just quickly tell you. Limit extending to a f of x that is equal to L. This means that limit exists. And what is continuity? Limit extending to a f of x equal to f of a, correct? So what they are saying, अगर ये फॉलो हुआ तो ये भी ट्रू है. इज दैट करेक्ट? दैट मीन्स अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो मैं बोलूँगा क्या, कंटिन्यूटी. यू हैव डन सो मेनी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट होता है बट दैट एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. डू यू अग्री? करेक्ट. बट व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है क्या? अगर फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इज दिस ट्रू? लिमिट एग्जिस्ट होता है ऐसा. इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज क्वाइट क्लियर ना. ये जो एल है, एल को एफ ऑफ ए बोल दो, दैट्स इट. करेक्ट. सो ऐसा मतलब यू कैन कंसिडर लाइक अ स्टेप. पहले लिमिट आता है, फिर कंटिन्यूटी आता है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आता है. करेक्ट है. लिमिट डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी है तो आई कैन से इट इम्प्लाइज दैट इट इज लिमिट एग्जिस्ट. डिफरेंशिएबिलिटी है तो आई कैन से इट इज कंटिन्यूअस. करेक्ट. बट कंटिन्यूअस है, आई कैन नॉट से दैट इट इज डिफरेंशिएबल. लिमिट एग्जिस्ट, आई कैन नॉट से इट इज कंटिन्यूअस. करेक्ट. रिमेंबर इट एज LCD, जहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हम लोग, उल्टा आ सकते हैं ऐसा. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 1 इज नॉट ट्रू.
सो पहला क्या होता है, ओनली 1:2, ये तो गया. Only 2. What about 2? Can you quickly tell me? Yes. What about second? If you don't agree, then you need to give me an example. Give me a function जिसमें लिमिट का वैल्यू आता है and f of a is a real number. They are saying that implies f of a is a real number. मतलब ज़रूरी नहीं है that is L. It may be anything. That is what they are saying. They have a good point that this need not be equal to L. Correct? But they are saying it is a real number. That's it. Nothing else. It will be a real number. And if you see the graph of this, हम लोगों ने बताया कि हर एक उसी देयर विल बी एक रेक्टेंगल उसी के अंदर रहेंगे. एंड एफ ऑफ ए निकाला तो वो भी उधर ही कहीं पे रहेगा ना, और नहीं भी रहा तो कहीं पे भी रहेगा. दैट मीन्स इट एग्जिस्ट. इट नीड नॉट बी इक्वल टू एल. सो ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू. दैट मीन्स व्हाट कैन आई से, ऑप्शन बी इज करेक्ट. करेक्ट. ओनली 2 इज ट्रू. व्हाट अबाउट 29? Yes. If they are saying f of a equal to L implies, is that true? F of a equal to L है तो that implies extending to a f of x equal to L. This is true only if your function is continuous. Correct. So there is no condition given कि ये continuous है कि नहीं. What about this? If f of a equal to L implies limit f of x is a real number. What about this one? They should have mentioned first part कि उसको L हम लोग consider कर रहे हैं. Option 1 is false. Only 1 is true. ये गया. If f of a equal to L, then that implies that limit extending to infinity f of x is a real number. Yeah, it is same as the previous one, I think. Yes. If f of a equal, this is same as this one actually, I think. Then they are saying limit is a real number. Correct. That is L is a real number. So I think option B is the correct one here also. Okay. And 30 ka option D. Okay. Anything else here? 31, 32, 33. Okay. So I'll go to the next page. Yeah. Tell me. Tell me the numbers. 34 and 36. Anything else? ये दोनों को भी मैं ले लेता हूँ. दिस इज स्टैंडर्ड, इसको डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं. डिरिचलेट फंक्शन. This function is nowhere continuous. That means discontinuous everywhere. So is continuous nowhere. Option D. और अगर ऐसा रहा तो ज़ीरो को छोड़ के बाकी सब पे कंटिन्यूस नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ nowhere it is continuous only at 0. That is option C. ठीक है. हाँ. Now let us see 34. The function is defined f of x equal to cos x plus 1 and when x is, what is this, f pi है क्या? Should I consider pi? Because ये f थोड़ी रहेगा ये f3. So I'll consider pi here. Okay. I'm sorry for the correction. Yeah, I think I should have told it. Yeah. Here it is pi. Okay, that's it.
सो व्हाट डू यू थिंक फंक्शन कंटिन्यूस मतलब क्या? Limit will be equal to this guy, so you just need to take limit. You need to take limit x tending to pi cos x plus 1. What is that? Cos pi plus 1. What is cos pi? Yes, minus 1 plus 1, that is 0. मतलब ये r का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना. Yes, so what is the answer? What is the answer? None of the option D. r equal to 0 कहीं पे भी नहीं है. Only if ये x equal to pi है ना, so I may reframe the question ऐसे. तो ठीक है, ऑप्शन डी. ओके. व्हाट अबाउट दिस वन? 36 ना. 36 क्या है? द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स इज कंटिन्यूअस वेयर. बोलो, व्हाट कैन यू से? एनीबडी? सी प्रॉब्लम कब होता है कंटिन्यूटी में? दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो कंटिन्यूस होता ही है. सो प्रॉब्लम कब होता है कंटिन्यूटी में? व्हेन अगर फंक्शन को ब्रेक किया हो दो पार्ट में तब प्रॉब्लम होता है, या डिवीजन हो तब प्रॉब्लम होता है. करेक्ट है. सो इसमें जस्ट इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरी रियल नंबर. Is that okay? What else? Shall I go to the next page? Yeah. No, so there are 3 questions only. Tell me, बोलो कौन सा क्वेश्चन इसमें से डाउट है? 40. What about this 41, 42? Okay. So let us start with 40. Amongst the following, the false statement is. Tell me. Oh, there should be an arrow here. There exists a function which is discontinuous only at one point. Does this exist? Yes. Yeah, this is true, na? There exists a function which is discontinuous only at one point. Can you tell me what are the function, or can you give me a function? Let me here show you. Suppose f of x equal to x when x is positive, and when x is negative, then say it is phi. So this function is not continuous at x equal to 0. अदरवाइज तो ये कंटिन्यूस है ना बाकी सब वैल्यू के लिए. करेक्ट. 0 पे बस कंटिन्यूस नहीं है. सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज discontinuous only at one point. This is correct. That means this is true. Correct. What is the next one? There exists a function f from r to r which is continuous only at one point. Can you give me a function which is continuous only at one point? And I think I just now talked about that function. Yes. Can you give me a function which is continuous at only at one point? Just ऊपर का slide अगर देखोगे तुमको click होएगा. I have a function. Do you see the 39 question? What is the answer? This guy is continuous only at 0. Otherwise it will be a Dirichlet function, and Dirichlet function is nowhere continuous. Do you agree? So matlab these two people are true. Correct. Now what is the answer? The third one is at least one of A and B is true. So that is also true. Even at least में दोनों का included. This is also true statement. At least one of A and B. This is false statement. Do you agree? ये क्या बोलता है? A और B में से कोई एक false है, but मेरे को पता है दोनों true है. So which of the question is false? So option D. Agreed or not? I have given you the existence की बात हो रही थी, तो I have given you the function. Yes. So option D is the correct.
Done? Yeah, okay. Let us see the next one. Yeah, the three is removable discontinuity of which of them? Correct. So bolo. 3 is removable discontinuity. Removable discontinuity means what? What do you mean by removable discontinuity? That means I can remove by changing the value. Yeah, correct. Okay, okay, okay. So let us see. Can you see what about B? Can I remove this discontinuity? That means if I take limit extending to 3, this will be always 1 by 0 form. So this will never be continuous. Do you agree at point 3? There will be always. And same happens with this one. What about this? X square minus 2x minus 3. Can I factorize this guy? X square minus 2x minus 3. Or let us check whether 3 is a problem for me or not. So 3 put किया तो ये क्या आएगा? 3 square is 9. 9 minus 3 is 6 and 6 minus, yeah. So 3 is a problem for me here. Correct? But I can factorize this guy. Do you agree? If I factorize it, let us see. X square minus 2x minus 3. Can you give me two roots? X square क्या लिखूँ? Minus 3x plus 2 plus x ना? Minus, I think this will work. So x minus 3 plus 1 x minus 3. So I am having x minus 3 and x plus 1, correct? So in the denominator I am having x minus 3 and x plus 1. I'll cancel x minus 3 and x minus 3. I'll be just remaining this by this guy is just 1 upon x plus 1 for me. Do you see, now 3 is not a problem for me. That means I can remove that part by dividing that, by factorizing that. Agreed? What about this guy? X square plus 2x minus 3. Whether can I factorize this guy where x minus 3 cancel होएगा क्या? If you put x equal to 3 तो ये क्या आएगा? 9 minus 3, ये 6 plus 6 12 हो जाएगा ना? नहीं होगा तो this is also not, this is also not, and this is option C is the correct one. Correct? Is that clear to you? Nice. What about this one? Can you do that? Which of the following function has removable discontinuity? Same question. What about this one? ये तो नहीं रहेगा. Are you sure of this? ऊपर कुछ है ही नहीं जो मैं कट कर सकूं. ये नहीं है. What about this? Even ये भी नहीं है. I don't have in the numerator so that I can. What about this? पहले चेक करो 2 is the root for this or not. 4 minus 2, that is, हाँ 2 is the root, so I can factorize this. Just check quickly. x square minus x minus 2 क्या आएगा ये? x square क्या करूँ मैं इसको? 2 minus 2x plus x ना, minus 2, so x common, x minus 2 plus 1 x minus 2 equal to 0. So you are having x minus 2 and x plus 1, that is equal to 0. So I should not put equal to 0. So factorize kya, I can cancel x minus 2, so this will be just become x plus 1. Do you agree? Which does not have any singularity, any discontinuity. What about this one? Cos x minus 2 upon x minus 2. How will you do this? Whether limit exists, whether limit extending to 2 cos x minus 2 upon x minus 2, whether this exists or not. Anybody? जब भी न्यूमरेटर में cos दिखे, साइन दिखे, तो you just need to do one thing, and what is that? Cos of x minus 2 is lying between minus 1 and 1. This is the Ramband for us. And you just divide x minus 2 here, divide x minus 2 here,
डिवाइड x माइनस टू, यू विल सी ये भी कन्वर्ज नहीं होता, दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, correct. And one more thing, you cannot use L'Hopital rule here. What is L'Hopital rule? You cannot differentiate numerator and denominator. You must remember that. That is only possible when you are having 0 by 0 form or infinity by infinity form. That is not the case here. So this is also gone. What is the correct answer? Option C. Is that clear to you? Yeah, okay. Anything else? Any other doubt, or we should stop? Anything else? Yeah. Yes, anybody? बोलो. अगर वो इंटीजर है तो उसका फ्लोर फंक्शन वही आएगा ना. सी फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन क्या देता है, कोई भी नंबर का इंटीजर वैल्यू देता है, बट अगर वो इंटीजर ही है तो आंसर वही आएगा. समझ रहे हैं? अगर वो इंटीजर, हाँ मतलब करेक्ट, फ्लोर ऑफ फाइव दिया है तो वही फाइव ही आएगा, या सीलिंग ऑफ फाइव दिया है तो फाइव आएगा, बिकॉज फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन गिव्स द इंटीजर वैल्यू. अभी जिसमें डेसिमल है उनके लिए ठीक है, बट जो खुद से इंटीजर है उसको क्यों चेंज करोगे. एक्चुअली फ्लोर फंक्शन का डेफिनेशन ये है, इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर. और इंटीजर फ्लोर ऑफ एक्स बोला तो इट इज अ इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स. सो लेस देन इक्वल टू, डू यू सी इक्वल टू मतलब आ गया वो. एंड सेम सीलिंग फंक्शन क्या आएगा, इंटीजर विच सॉरी शुड बी स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और उधर आएगा लार्जेस्ट इंटीजर. या इज दैट ओके? Okay then. So shall we stop? No, definitely I will not do that. हाँ तो सॉल्व किया तो यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ. जब सॉल्व किया है तो मतलब देयर शुड नॉट बी एन इशू कि वेरीफाई करना है. डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुमको जो क्वेश्चन में डाउट है आस्क मी, आई कैन टेल यू नाउ. अगर तुमने सॉल्व किया तो यू शुड नॉट हैव अ क्वेश्चन कि सर वेरीफाई करना है, बिकॉज यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी कि सर ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया है कि नहीं, मतलब मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, देन यू कैन आस्क. बट ऐसा नहीं कि मतलब आई कैन टेल यू द आंसर कि हाँ ये आंसर है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट्स इट. नो हर्स फीलिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट. या एंड डू नॉट ट्राई टू बाय हर्ट एनी थिंग. मतलब मैंने बहुत देखा है कि एम सी क्यूज़ वो याद कर लेते. डोंट डू दैट. इवन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया तो जस्ट बी डबल श्योर, भले इसको तुमको अगर आंसर पता भी हो, अगेन बी डबल श्योर, सॉल्व इट अगेन, बिकॉज देयर में बी अ क्वेश्चन कि जो इधर एम सी क्यू में ऐसा कुछ है बट वहाँ पे चेंज है, ऐसा देयर मे बी समथिंग. ओके, सो यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ देयर ऑल्सो कि हाँ मुझे याद था कि ये आएगा वो आएगा. You verify then put. This is what mathematics. You should not trust anybody first of all. You should trust always yourself. Yeah. Okay. Thank you so much everyone. All the best for your exam. See you with the something new. That is semester 2 part. We'll do that. Okay.